Hi guys, how are you doing today? दोस्तों, my name is Goela and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. I teach you when to invest in stock markets, where to invest in stock markets, and I mentor you that you will reach your financial freedom. I will keep on guiding you till the point you hit your financial freedom. Now, a lot of people come up to me and they ask me that, sir, I want to do a degree in stock markets. I want to do a qualification. मैं आगे stock markets में पढ़ना चाहता हूँ. I want to become a qualified stock market investor. मैं क्या पढ़ूँ? Now, देखो सबसे पहला तो there is no such thing as qualified stock market investor. Why? Because to become a stock market investor, all you need is a demat account. अगर आपके पास वो है, then congratulations, my friend, you are a stock market investor. But for people who are saying कि नहीं सर मुझे अपना educational status बढ़ाना है, मुझे CV में डालना है कि मैं और क्या courses या degrees करूँ. So today, let's discuss what degrees are available to you that will help you to make your career in stock markets. Now, before starting the entire video, I want to clear 2-3 things. सबसे पहला जो भी मैं कोर्स और डिग्रीज मेंशन करूँगा, I will not be talking about their eligibility criteria कि उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए, how much money do you need, how much time do you need. I'm not talking about all those things. I'm sure आपको चीज़ें और जगह मिल सकती हैं. All I will be discussing कि ये डिग्री है, इसका स्टॉक मार्केट से कितना रेलेवेंस है and how will it help you and till what extent will it help you to build your stock market career, right? Now, finance. Now let's understand finance. Now देखो finance क्या है ना, it is a very big umbrella. When you are saying finance, you can mean accounting, you can mean taxation, you can mean mergers, you can mean anything in the world of finance, right? So if you talk to me, I am a guy of finance, but क्या मुझे taxation आती है? नहीं, मुझे आता है equity research. I know investment. So if you go to another person, उसको कुछ और आता है. जरूरी नहीं कि finance का है तो उसको सब कुछ आता है. राइट तो इसके बीच में लाइन बहुत जल्दी ब्लर हो जाती है. यू वोंट रियलाइज कि डिफरेंस कहाँ है. ये सब एक दूसरे फाइनेंस की चीज एक दूसरे को ओवरलैप करती रहती है. राइट सो इन द कोर्सेज एज वेल देयर आर लॉट्स ऑफ ओवरलैप्स. वी विल ट्राई टू क्लियर देम एज मच एज पॉसिबल. सो सबसे पहले दो मेजर डिस्टिंक्शन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, द मेजर डिस्टिंक्शन इज गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन एंड प्रोफेशनल डिग्रीज. Government certification and professional degrees. Government certification is something that is required but not preferred. Professional degree is something that is not required but definitely preferred. इसको मैं समझाता हूँ. Now देखो सबसे पहले when I say government in stock markets, I mean SEBI. Now SEBI ने government certifications निकाली है by NISM. So NISM certifications are SEBI certifications, are government certification. Why? Because if you want to become an advisor, portfolio manager, fund manager, technical call, broker in stock markets, आपके पास कुछ minimum level of knowledge तो होना चाहिए. क्योंकि पहले if you see people without having any knowledge or qualification, they used to advise people. Do you think it's fair? Of course not. खुद नहीं आता दूसरों को advise करें. So that is why SEBI has made it a mandate that if you want to do this job, if you want to conduct this job in financial markets, you have to have this certification. That is why it is required, right? तो SEBI के एग्जाम होते हैं, NISM के एग्जाम आपने सुना हुआ है. NISM के एग्जाम SEBI के एग्जाम्स. Now NCFM जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है does the same thing what SEBI is doing and the module SEBI is conducting on a larger scale. That's it. और कुछ difference नहीं. So don't get confused. NISM SEBI, NCFM National Stock Exchange of India. Now, should you do these certifications? No. You should only do these certifications जब आपकी job requirement हो. If you suppose आपको broker का job मिल गया तो broker की job के लिए you have to get that certification, तो जाके आप दे दो. अगर आपको advisor का job मिल गया, advisor के लिए you need a certification, तो जाके दो. But without needing that certification आप jobs कर लोगे, so आप करोगे, yes definitely आपकी knowledge बढ़ेगी, but will it add on to your CV? Will it be a big thing on your CV? Absolutely not. Companies, again reminding you, it is required, not preferred. Companies do not prefer this. What do companies prefer? Professional degrees. So government certification clear हो गया. NISM SEBI, NCFM National Stock Exchange of India, ये basic requirements है जो आपको legally job के पहले चाहिए होंगी. तो पहले job ढूंढो, फिर whatever requirement है आप उसको certification दे दो. They are not difficult, right? Now let's come to professional degrees. So let's discuss all the qualifications available here. Qualification number 1, FRM, Financial Risk Management. Now FRM में you will study risk in every aspect. Risk क्या है, risk क्यों है, how to mitigate, erase and reduce risk.
राइट? अब वो आपका रिस्क होता है, मार्केट रिस्क हो सकता है, देयर कैन बी क्रेडिट रिस्क, देयर कैन बी ऑपरेशनल रिस्क, देयर कैन बी डेट, देयर कैन बी बॉन्ड्स, सब कुछ इसमें आएगा, राइट? तो इक्विटी का इसका पार्ट थोड़ा कम होगा। इसमें मेजर कंसर्न्स क्या होंगे? आपका डेट मार्केट, आप जिसमें आपके डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आएंगे। सो आफ्टर डूइंग FRM you can be a risk manager, you can be a strategist, you can do modeling, so that is FRM. स्टॉक मार्केट में इसका इफेक्ट क्या है? थोड़ा कम, ज़्यादा फोकस स्टॉक मार्केट्स में नहीं है। इट्स अगेन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत बड़ी जगह है। क्वालिफिकेशन नंबर 2, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, chartered market technician, and CMT is a degree in technical analysis. Yes, I know many of you must be very happy or pleasantly surprised, but बहुत लोगों को पता नहीं है that CMT is a proper qualification in technical analysis. In that you actually learn statistics, technical analysis कैसे बने, कैसे आए, उनका साइंस क्या है, how to actually technical analysis का 1+1 क्या है। Practical investing में do you need to learn that? No. प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग में ऑल यू नीड टू नो कि इसको यहाँ बाय करना है, इसको यहाँ सेल करना है, एंड यू कैन मेक अ स्ट्रैटेजी ऑन दैट। बट CMT गोज मच डीपर टू दैट। सो इफ यू लाइक टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज वन थिंग, क्वालिफिकेशन दैट यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू। ओनली बैड पॉइंट ऑफ दिस इज दैट none of the major companies in our country, almost none of the major companies in the country recognize this. CMT को हिंदुस्तान में recognize नहीं किया जाता है, and बहुत देशों में नहीं किया जाता है। So you can do this for your own satisfaction, for your own learning, but क्या इस सब कुछ जॉब्स मिलने की चांसेस हैं? बहुत कम, because companies will not recognize this. After this, after doing CMT, you can take out technical calls, you can become a trader, you can become a fund manager, you can do all these specific things. Qualification number 3, MBA. Yes, Masters in Business Administration Finance. Now ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। Now MBA in Finance यह सब कुछ कवर कर देगा अंडर द अम्ब्रेला। इट्स अ वेरी जेनरिक कोर्स। इसमें यू विल लर्न अबाउट मैनेजमेंट, इसमें यू विल लर्न अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट अ बिजनेस, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसके बाद यू कैन बिकम अ हेज फंड मैनेजर, यू कैन बिकम अ इक्विटी एनालिस्ट, यू कैन बिकम दिस, यू कैन बिकम एवरीथिंग अंडर द फाइनेंस। MBA फाइनेंस इतना बड़ा टर्म है, तो इसमें स्टॉक मार्केट्स का रेलेवेंस थोड़ा कम होता है, बिकॉज बहुत चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट्स छोटा पार्ट है। सो इफ यू ओनली लुकिंग फॉर स्टॉक मार्केट्स, इतना उसमें आपको MBA फाइनेंस में सीखने को नहीं मिलेगा। इसका सैड पॉइंट क्या है, बैड पॉइंट MBA फाइनेंस का इज दैट MBA का नाम ना बहुत खराब हो गया, बिकॉज नाउ एवरी कॉलेज इज ऑफरिंग MBA फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, राइट? सो दैट इज वाई इसकी इतनी वैल्यू नहीं रही है। इफ यू आर डूइंग MBA फाइनेंस फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, तब नथिंग लाइक इट। बट अगर उसके नीचे यूनिवर्सिटीज के, अनफॉर्चुनेटली उसका इतना रेलेवेंस नहीं है। सो इफ यू लुकिंग फॉर स्टॉक मार्केट्स, MBA फाइनेंस में ज़्यादा फोकस नहीं होगा। क्वालिफिकेशन नंबर 4, MSc in Finance or Masters in Finance. Now this is the science of finance. Finance क्यों है, कैसा है? Again, finance में इसमें सब कुछ आएगा, but stock markets is a very considerable portion of this. So yes, you can definitely go into this. For stock markets, you want to go for MSc in Finance is a great option to go for. But MSc in Finance stock market specific job मिलना थोड़ा मुश्किल है आज के ज़माने को देख के। वरना if you want to understand the science of stock market, this is a great qualification to have. Qualification number 5, CA, a chartered accountant, and I'm sure आप सबको पता है what a CA is, and CA का सिर्फ एक ही काम है, जुगाड़। Of course not, I was just joking. I don't mean to undermine this profession. CA क्या करता है? In the course of CA, you will learn audit, you will learn taxation, you will learn accounting. Will you learn investing in stock markets? Very, very, very less, right? If you come to me and if you tell me that Harsh, can you please help me in my taxation accounting? दोस्त मैं नहीं कर पाऊंगा, because I am an equity analyst. I am into equity, I am into investments, I am into stock markets. So a lot of people say कि अच्छा मुझे इन्वेस्ट करना है, चलो मैं अपने CA से पूछता हूँ, मुझे करना है ILAS में CA. They cannot help you. Yes, a CA can understand companies, can do better research than others, definitely. But CA के qualification में है नहीं to invest in stock market. So yes, your CA can be aware, so you can definitely ask him. But technically, is he qualified to do that? No. So if you're looking for to do a course in stock markets, CA related नहीं है, so you can clearly avoid this program. Qualification number 6, NSE and BSE programs. Now you'll see
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है. एंड व्हाट आई स्पेसिफिकली लाइक, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल मार्केट्स में है, रिस्क मैनेजमेंट में बहुत स्पेसिफिक है. एंड करिकुलम मैंने इंटरनेट से देखा था, आई रियली लाइक इट. एंड दे ऑल्सो से दैट दे गारंटी अ जॉब आफ्टर इट, सो दैट्स फैंटास्टिक. नाउ अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव बीन enrolled in these courses. So when I asked them कि before shooting this video कि अच्छा कैसा है कैसा नहीं, give me feedback. Now I'm telling you their feedback होता है, दूसरों का feedback अलग हो. So my sample size is of my students. Now what they told me, देखो course is very nice but practicality and effectiveness थोड़ी कम है. And the job they give you is of a very menial level. बहुत menial level का job है. तो you really have to work hard to reach that level. And जो आप कोर्स के पैसे दे रहे हो compared to the job you get, you cannot get back your money you invested in that course. ठीक है, तो जितना पैसा दे रहे हो उतना शायद उतनी जल्दी वापस नहीं मिलेगा, but yes, it's definitely a good course. Now the next qualification is CFP, Certified Financial Planner, और ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है CFP कोर्स. And to be honest, Certified Financial Planner is a very good course. I personally find it very good. Why? Because see, this is financial planning for an individual. So if I come to you, मैं बोलूँगा सर मुझे हेल्प करिए, मुझे इन्वेस्ट करवाइए, तो आप मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि अच्छा सर इतना रियल एस्टेट डालो, इतना म्यूचुअल फंड लो, इतना इंश्योरेंस लो, इतना ये करो, इतना सेव करो, इतना बैंक में डालो, इतना इक्विटी में डालो. सो यू विल हेल्प मी ओवरऑल. CFPs आजकल काफ़ी डिमांड में है. सो लॉट ऑफ ब्रोकिंग हाउसेज, लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स आज CFP उनका प्री रिक्विजिट हो गया है टू बिकम अ CFP. व्हाट आई लाइक कि CFP में टैक्सेशन भी डालते हैं. सो गुड फंड मैनेजर्स दैट जो आपका टैक्स भी बचा पाए. सो दैट इज वेरी नाइस. स्टॉक मार्केट में रेलेवेंस डायरेक्ट थोड़ा कम है, बट येस जो स्टॉक मार्केट में स्किल्स दूसरी जरूरी होती है टू बिकम अ इन्वेस्टर, CFP definitely gives you that. Now the next and the final and the gold standard qualification, the benchmark qualification in investment right now in our age and time is the CFA program, Chartered Financial Analyst. ये gold standard बन चुका है. Why? Because it directly hits the equity. CFP में you are doing portfolio management, financial management for a person. इसमें you doing the same thing for the entire company. CFA में you will learn strongly about ethics, which is something I really appreciate. कैसे दूसरे को cheat नहीं करना है, कैसे you will be honest, कैसे you will be true to your ethics. Sad part is that ये top 5 most difficult exams in the world में qualify करता है, so it is very difficult to crack all these exams. But yes, ये directly equity को help करेगा. And out of all these courses, till now CFA program is the best program available. Good news is that Aditya is a CFA himself. So if you want him to make a video on how to clear all the CFA levels in first shot, and he was one of the youngest CFAs to clear CFA in our country. So if you want to know how did he do it, kaise did he do it, what was his story, how did he plan himself, what guidelines if you want him to give you, mention down in the comments below, DM us, and we will make sure that we make a video separately on how to crack CFA. Well, those were all the degrees and qualifications available to you in today's time. Now, अब आप बोलोगे चलो ठीक है मुझे समझ आ गया क्या डिग्री है क्या क्वालिफिकेशन है, बट मैं कौन सी करूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं MBA कर लेता हूँ, मैं CFA कर लेता हूँ, मैं CFP कर लेता हूँ. This is a wrong way to go. First decide आपको करना क्या है. In stock market itself, you want to become a fund manager, you want to become a broker, you want to take out technical calls. आपको करना क्या है? First decide that. Then you decide what degree you should take for. राइट, तो जो इतने स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर रहा हूँ, जितने लोगों को मेंटर कर रहा हूँ, पहले हम स्टॉक मार्केट्स में 7-8 महीने रहते हैं. आई मेक श्योर यू ट्राई आउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट्स. मैं आपको स्टॉक मार्केट के हर एजेंडा से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा सर आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर अ इंडिविजुअल. मैं आपको क्या बोलूँगा, सर गो फॉर CFP, एल से अच्छा ये नहीं चाहिए, गो फॉर दिस. बट इफ यू डू द अदर वे राउंड, पहले आप डिग्री कर रहे हो, बाद में आप देख रहे हो अच्छा क्या लगता है, उसका कुछ फायदा बिल्कुल भी नहीं है. अब आप बोलोगे अच्छा तो डू आई हैव टू डू अ डिग्री, क्या ये ज़रूरी है, क्या डिग्री के बिना मैं एक्सेल नहीं कर पाऊंगा? देखो फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी कोई डिग्री बनी नहीं है और बनेगी भी नहीं which can teach you investment stock markets. And I repeat again, there is no program, no certification that can actually teach you stock markets. Why? Because all the programs here I have mentioned और जो बनेंगे are theoretical. Stock markets is not theoretical. Stock markets on paper मैं आपको दिखाऊंगा इससे बेस्ट कोई चीज़ है ही नहीं. But reality में ऐसा नहीं है. Reality में people are losing money like anything. There's a reason. Why? Because stock markets on paper and on reality बहुत different है. So if you only learn the theoretical part and then you come in markets, कुछ फर्क पड़ेगा?
If you ask me, if you compare theory and practical, I would say practical is far more important than theory. Right? So that is why some of the biggest investors in the world do not have these degrees. और कुछ जिन थोड़ों से के पास, some have these qualified degrees and they don't even use it and they've publicly accepted it. Now people ask me that, Harsh, चलो ठीक है, you need practical experience and you need theoretical experience, मान लिया, which will take a lot of time. Then how come you are successful at this early age in stock markets? ये कैसे कर लिया? Well, to them I only say one thing, that I have a secret superpower, and my secret superpower is my mentor. If I'm confused in stock markets, I go to my mentor. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, I go to my mentor. बहुत टाइम होते हैं जब मेरी investments are not working out, I break down emotionally. I go to my mentor. And you take whosoever, everyone has one mentor. बहुत जरूरी है. And any field, stock market छोड़ो, in any field आपको गुरु होना बहुत जरूरी है. And I am very lucky because वो गुरु मेरे लिए मेरे पिताजी हैं. My father is my mentor. Why? Because he has been in stock markets for the past 40 years. बचपन से since 6th 7th standard he used to teach us about stock markets. That is why we have such an edge over others. Right? तो जो भी प्रॉब्लम थी, I go to him. Now I realize कि see, I was lucky in that situation because I had someone like him in my life. हो सकता है आपके पास वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते ना, हो सकता है you don't have such a mentor figure. उसी के लिए हमने गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस बनाया है. The point is that we can give that mentorship to everyone. We are very strong on ethics. Take the free session. जो अब इसके बाद है वो देखो. Again मैं आपको हमेशा कभी स्टॉक मार्केट से जंप करने को नहीं बोलूँगा. Go slowly and steadily. पहले रियलाइज आपको स्टॉक मार्केट्स में एग्जैक्टली करना क्या है. उसके लिए पहले बी इन स्टॉक मार्केट्स फॉर एटलीस्ट 7-8 months एटलीस्ट टू गेट अ क्लियर पिक्चर. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू कि अच्छा अपने स्टॉक मार्केट पैसे रखो ये करना है. आई कैन इमेजिन बहुत कन्फ्यूजन होगा एंड इट विल टेक टाइम. यू विल नीड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. Go and watch the free session. नीचे डिस्क्रिप्शन में है. You can find it online on our website. Links आपको सब मिल जाएंगे. फ्री सेशन देखो. Opt for a mentorship program. चाहे आप इन्वेस्टर हो या ना हो, आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर रहे हो, और इवन मोर इम्पोर्टेंट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, खुद का दिमाग नहीं चलता. You need someone, you need a mentor, and I will be that mentor who makes sure you reach your financial freedom. मैं कुछ किसी भी एक्सटेंट तक चल जाऊंगा. I will curse you, I will say you're wrong when you're wrong, I will pat you when you're doing very good, but I will make sure that you reach your point. You need a mentor. And share this video, like this video. किसी को अच्छा लगा तो लाइक करना, किसी को रेकमेंड करना. मेक श्योर दैट जो भी आपके आसपास हैं they are going by the right guidance, और सही गाइडेंस और सही तरीके से they are moving ahead and making their career in finance. That was it for today. This is Goela School of Finance, financially empowering.